India. And today we are lucky enough, my friend and my colleague also, and a great researcher of the India, researcher of the internationally record, Dr. Siddharth Panda, Professor Electrical, IXHOD, Vishwapurla, and he no doubt more than international 87 or right. Sir, how many international papers you have in your literature? More than 100. More than 200. And national very few. And how many guided PhD scholars? 13. And pipeline 12. 4 or something. So therefore, the idea, thoughts, and ideology, innovation, research, and study related, electrical engineering related, applied electrical engineering related, we will be very helpful and by the professor Dr. Siddharth Panda. Is it ready? And I request, sir, this is the Vaani program, the simultaneous English and Oriya. Both may please be guided by the Professor Panda. पूरा ओडिया रे कहना एक दिन ना अजय सर ओडिया रे बोलते सब सी ओडिया रे कहते सो ओडिया इंग्लिश मिसिंग मु कहू सो कीपिंग इन माइंड ऑफ रिसेंट मतलब कोन होची रिसेंट डेवलपमेंट होची यूज ऑफ एआई टेक्निक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक और रिसेंट रे कोन होची यूजिंग द स्मार्ट ग्रिड माने डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी सोर्सेस सोलर रो एनर्जी कलेक्ट करियो विंड रो एनर्जी प्लस अन्य सोर्स भी all that sources and as well as the electrical vehicles nowadays we are using. So there is several test system ava jodi ki solar, wind, electric EV jibo tar one problem hai ki using AI techniques how to solve that sila dekhiyo. So the topic is frequency problem mane to control the frequency. Frequency is not taking details actually. Frequency control is an important requirement in power system. Frequency our 50 Hz. So 50 Hz all our electrical devices are designed to operate at 50 Hz. 50 Hz যদি ଅଛି মানে তার লাইফ পিরিয়ডটা বড় হবে। 50 Hz যদি ଅଧିକ ହେଲା କି କମ ହେଲା ମାନେ ତାର ଲାଇଫ ପିରିୟଡ କମ হবে। Losses may increase. Other adverse effect will take place and ultimately it will be damaged the component. So frequency control करियो कार करिबा मॉडर्न पावर सिस्टम जो स्मार्ट ग्रिड सिस्टम रो फ्रीक्वेंसी सो टेस्ट सिस्टम इज सोलर विंड इलेक्ट्रिक व्हीकल इंटीग्रेटेड स्मार्ट ग्रिड सिस्टम प्लस आज पूरा नॉट थ्रेट स्ट्रेटजी साइबर अटैक्स so so many phones are coming तो ता विषय में डिस्कशन करिया बाय so cyber attack जे है तार अंडर cyber attack what is the analysis we will do. Keeping in mind of all the research, AI technique, solar, wind, EV, then cyber attack, ये ऊपरे मोर presentation ना. So what we want? Why renewable energies? And solar, wind, we are saying main is the reduction of the carbon. No, renewable energy. So day by day, all the countries are now shifting towards the renewable. In fact, some countries, it is the flow. Especially the transportation sector is moving towards the electrification of vehicles. And in India, by 2030, there is a target to integrate 8,000 gigawatt of renewable, which is more than 2,800 gigawatt. Actually, Indian government has made a plan that by 2030, all the vehicles, whether commercial or private vehicles,
EVs, no, the vehicle career also keep in mind with that person. Okay. So I see life period maybe maximum 10 years. After 10 years, so EV use or other sources, hydrogen. And many countries, like for example Norway has the most renewable power generation that they have integrated. So 99% of their energy is generated by renewable sources. New Zealand 81%, Brazil 79%. South Arabia is easily available fuel. That is the minimum. South Arabia is the least integration, 0.1%. And cheaply set petrol diesel so many use. So managed grid or smart grid are the best alternative to conventional grid, including renewable energy source and EVs generally present. Now why electric vehicles? Now we are spending so much. For example, in July, India spent the 95,000 crore to import the oil. And Russia alone supplied problem. USA is displeased with India because we are importing the oil from the Russians. The total import bills, data collected is some billion of rupees. And India almost depends 87% of its oil on the export. So import kori sila use koruchi, import not export. So that's why the government of India plans for a mass scale shift to electric vehicle by 2030. So all vehicles, whether personal or commercial, will be powered by electric. So the present system is not designed. Wortman system it is not designed to handle this electric vehicles. That means infrastructure change and other changes are required. Other reasons why EV main reason is oil reserve after some time it will be finished. Day by day it is depleting and it will finish. And coming to the challenges, main challenges is the public places have no charging station. Battery problem possible. And model of EV, EV came with the vehicle. For example, Tata Nexon. Tata Nexon the EV version may be 17-18 lakh, normal ICBS version may be 10-12 lakh. So price difference are huge. EV they will draw the power. Certain areas are already having shortage of power. So additional power they will purchase. And major range is the limited driving range of EV. Petrol pumps are available, chariot are available. So EV charging stations are not available. And time taken, 4-5 घंटा लागे चार्ज करने. अगर EV चार्ज करना normal fast charging के लिए आज भी बहुत जल्दी काम हो. कोई भी you can charge DC charging करेंगे. And storage system has not been developed. So these challenges should be taken as an opportunities. पूरे challenge नहीं क्या हमें serious काम करेंगे. हमें we can have the PhD. As an engineer, our job is to solve the problems. So identify the problems, कौन-कौन problem होती. Then use your knowledge to solve that problem. In fact, I would example further number of bulla को solve कर सकते. We have removed that assignment system. तो दो assignment class assignment हमें observe copy पहला हमने simply the copying. No, more topic करो. Even आज के trend चल ताकि और ना तो junior भी दे दो. हमें copy करके दियो सब हम सब ले लो. तो one type of सीधा useful लगे आती. ये वो सब चेंज करो. मतलब that नया project जोड़ा कि related to what they have studied. For example, कुछ electrical machine था. So electrical machine one has like 5 topic choose करो. Not like say transformer problem. How to minimize the loss of the transformer by changing the material or something. How to improve the efficiency of the transformer. Or some motors
for identify of motors for EV. को motor टा बोलो कौन? ये type related to machines, but beyond their syllabus. से base project report, छोटा project, 4 page project report and 1 PPT. Only single slide, तो poster presentation था है. से वह करेंगे. So all the assignments are now removed. Instead of assignment, project based that assessment we are doing. So खाली वो presentation चाहिए. So we may not get the product, but at least now the student ताकि brain apply करी भाभी भी बहुत अच्छा करके करी. ताकि तो ChatGPT use करी search करी पाओ. तो now you are applying the brain at least. अगर कौन बोलता है brain किसे apply करो? Direct copy and submission. Okay. That too निजे सबमिट कर लेते हो मेजर जो पिला आप देख लेते हो क्या हैंडराइटिंग चेकिंग करो लेकिन कॉपी करके सबमिट असाइनमेंट सबमिशन से अनुसार की चेंज so out of the way you have to think so any problem it got to if there are problems we should take that as an opportunity so problem identification of problem is the major point कौन problem है तापर ताको आपके सॉल्यूशन तैयार करेगा So electric vehicle, main electrical vehicle का source कौन? बैटरी था, बैटरी का power store करो ही दो जिससे power का मैं use करूँ। That is the main concept. During emergency, से power का हमें utilize करने पड़ेगा। So that concept is known as vehicle to grid concept. So vehicle to grid means electricity flows from generators through the grid to the electricity users and in B2G technology electricity flows back to the grid from the batteries in EV so हटात generation problem वाला generation तो प्रॉब्लम ही है demand of the load so good power available so whether can you use the power stored in the battery there will be condition there are battery condition battery owner तार सम्मति नेबे से यदि राजी अछि then you can कितना पॉसिबल कि फ्यूचर लक्ष गाड़ी है इस गाड़ी से 1 के 15 किलोवाट कैपेसिटी सो लक्ष कितने कैपेसिटी सो हाउ मच एनर्जी इज एट आवर डिस्पोजल पॉसिबिलिटी है से एनर्जी हम यूज कर पाएगा फॉर द बेनिफिट ऑफ बोथ इफ द पावर इज ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी दे विल गेट द मॉनिटरी बेनिफिट इलेक्ट्रिसिटी जे गाड़ी ओनर पाई पैसा जनरेशन इलेक्ट्रिसिटी आपके भी अच्छा पैसा दो छे टैरिफ आ सब स्मॉल कंज्यूमर्स में तो फिक्स रेट दो छे यदि यूनिट कंज्यूम करो अधिक पैसा दो एक्चुअली कोन हुए इलेक्ट्रिसिटी रेट चेंजेस फॉर बल्क यूजर्स थ्रू आउट द डे जोटा भी जे कमोडिटी देखिबे इफ द डिमांड इज मोर द कॉस्ट इंक्रीज हो इफ द जनरेशन प्रोडक्शन इज मोर कॉस्ट डिक्रीज हो same electricity if the electricity generation price is more then the cost of electricity will be less and if the demand is more than the generation then the price will rise so electricity price every 15 seconds tomorrow suddenly change it is not constant so for example during daytime basic demand is so energy price will be more during night time our consumption less no rati baat wala bahut कम electricity price चलो price less EVs मान कौन करिए they will charge their batteries when the price is less and they will sell when the price is more so they will get the benefit this concept so EV vehicle to grid technology enables electric vehicles to send the stored energy back to the power grid so as in mobile batteries support the grid during the peak demand. So जो demand बढ़ेगा कि कमेगा इतना क्या रिफ्लेक्ट होगा that will be reflected in the system frequency. So system frequency 50 Hz हमने देखा 50 Hz जो अच्छी माने there is a complete balance between generation and demand. Suppose सेना 49 Hz है. If it is decreasing means it indicates that now demand is more and generation is less. The frequency got la 51 Hz that means generation is more and demand is less so frequency is an indicator means our generation ta अधिक अछि ना demand अधिक अछि frequency
Last time बुझियो जे frequency constant रखियो काहे कि frequency change होछि then how to control the frequency and then the concept करने so EV it can impact in many ways the load profile system components phase balancing harmonics stability ये सब one on PhD topic okay using EV load profile improvement using EV ऐसा जैसे रिसर्च करियो ना PhD वाला system components phase balancing and voltage profile using EV कैसे हम improve करेगा तो आप लीजिए area of research stability improvement using EV so if planned properly and implemented so plan करके तुम्हें you do the research so that will be your thesis so there are many benefits it are the expert है तो चीज़ है spinning reserve peak load saving voltage regulation harmonics and support for renewable energy sources so ये सब आप use EV no benefit है spinning पूरे टाइम जनरल spinning reserve माने ready to supply the electrical energy generator जो अच्छी first generator start करियो start करी ready रखले तो आप then it can supply the energy तो battery का electrical energy EV रो battery का they are ready already charge है कर store energy is stored in the tank so as a spinning reserve they can be used similarly other things we can use so this is about the EV so here our aim is EV will be used for frequency control okay so as I said frequency control means frequency is an indicator whether the generation is more or the demand is more if the generation is more frequency will increase the body will if the demand is more frequency will decrease so EV can draw the energy or supply the energy electric vehicles in battery also Alam silent devotion now the EV battery can be used as a generator or as a load both system use करेंगे when the generation is more हम battery का charge करेंगे so EV will be used as a load when the demand is more the energy stored in the battery can supply the energy so as a generator हम use करेंगे so electric vehicle will be used as a controllable source or load simply हम जो load दबा load दबाना it will draw the fixed amount of power किंतु बैटरी रो हमें यूजिंग कंट्रोलर केती पावर हमें इधर सप्लाई करबा और रिसीव करबा that can be controlled so EV can be used as a controllable either load or source depending on our requirement so generation अधिक वाला बना as a load आप यूज करो डिमांड अधिक वाला बना as a source में यूज करो so frequency control is an ideal capability for EVs because the duration is very less frequency का in terms of seconds हमें control करो for a short duration energy is required so in that case we can use the electric vehicle batteries and main thing is लोगों का कहीं राजी नहीं है vehicle because it will offer economic returns for the vehicle as I said ताकि के recharge करते हुए when the energy cost is low कम पैसे देने के अधिक पैसे बिक्री करते से बढ़िया so they will get the benefit because they are helping the grid so grid के लिए एनर्जी दरकार है they have to install one more generator for the cost बहुत हो so that benefit will be passed to the vehicle owners so vehicle owner will get the benefits now coming to smart grid so smart grid is the new age form of power grid and it is gaining increasing attention from the researchers and industries. So it is a group of load and distributed energy sources that supply power to the local customers. Nowadays, I mean, rooftop solar produce. Odisha रे वेस्ट पोटेंशियल कम तो तमिलनाडु की कोई
wind use करते extensively. ओडिशा solar extensively use करते. So these are biomass chemicals. Majorly solar and wind based. So this grid, smart grid can operate in either islanded or grid connected mode. So this is a islanded means remote area. So only solar, wind or some biomass is used करके you can design a grid. So it is not connected to the main grid. Or sometimes it is connected to the main grid. And there will be controllers to coordinate multiple these energy sources like solar, wind and other sources. Now coming to this one, modern smart grids it has transferred all the signals to load कौन अच्छी कहते power generation हो सुबह का मैं बटन using communication system हमें signal का transmission करेगा. So there are some physical assets like the sources, distributed energy sources, loads and power electronics devices. Our the communication layer that is known as the cyber layer constitutes the communication network and software based computers. They are likely to be attacked. So what is the कुछ phone में भी दे देता है phone आते हैं. Your phone is reported करा suspected use होची. ये समझता बात ना तो लॉटरी उठे पाई चलो मैं लिंक पर क्लिक करो. ना cyber attacks से विषय भी अच्छी तरह से लाइन में अच्छी. So any IoT system लागला में it is brought to the cyber attacks. What is cyber security? You know the famous saying, the 5th century BC region कोई था. If you know the enemy and know yourself, you need not fear the result of the attack. मतलब हमें जब शत्रु जाने चाहिए हम निजू भी भले जाने चाहिए. तार काम कैपेसिटी आप काम कैपेसिटी. So हमें जो जोड़ा प्राय जीती चाहिए. But if you know yourself but not the enemy, for every victory gained, you will also suffer a defeat. किंतु वर्तमान आप क्या बोले? If you know neither the enemy nor yourself, you will succumb in every battle. जब हम शत्रु किए जाते साइबर सिक्योरिटी में की अटैक करते हैं जाओ. And know yourself माने हमारे सिस्टम का कौन? For example, smart grid. कौन सोर्स होती है? So we should know in detail about our system. अभी जब सिस्टम का जाने थे कि अटैक करते जाने में, then only you can survive. Knowledge it कौन का useful बने? आजकल देखो साइबर अटैक बहुत होती है. Cyber security. So जाने की कोई भी robot assembler, MPPT database. There are only two types of company: those that have been hacked and those that will be hacked. किंतु present scenario कौन हाल है? There are only two types of companies: those that have been hacked and those that don't know that they have been hacked. That means 100% it is hacked, not plot to hack. So cyber security refers to the protection of the network, hardware and software from attacks, damage or unauthorized access and the rejection of service. For example, so that's why the government of India has taken formed many committees like say the Indian Computer Emergency Response Team, Cyber Surakshit Bharat, Cyber Suchana Center, National Cyber Security Police. Government भी बहुत स्टेप लो चुके हैं. So मैं example here देखो India cyber attacks in India and one देखिएगा. So India business faces over 3,000 cyber attacks per week. So मैं example AICTE attack है 2023. So the hackers attacked the AICTE daily, causing severe shutdowns and disrupting the health service. Telangana and AP power utility systems attack है. हरियाणा ये तो पेक्युलर कैसे दिला हरियाणा बिजली विभाग करता है. कंपनीज कंप्यूटर सिस्टम इंस्टॉल द बिलिंग डाटा ऑफ कस्टमर आप लोग डिमांड करे एनरोल देले आप रजिस्टर करो नॉर्मल सिस्टम का पूरा लॉस है. सिमिलर अदर एग्जांपल्स एजुकेशन रिसर्च सेक्टर अराउंड 3 attacks per organization every week. Government military there are attacks. So these are the real attacks in India and world. Okay.
wall data is blue color to this. It would collect both the वो sector तो बेसी attack होच क्योंकि energy sector is एक सब का पूरा energy का energy is the main it is current line all activity will be stopped no power देते नहीं power दिला पर then all automation everything पूरा का चले गया किसी को power देते नहीं सब बंद है so energy and utility industry stand as a primary target of the cyber attack जो data country यदि attack करेंगे then first they will target the all energy source को यदि हमें attack करेगा they will तापर तक पूरा ऑपरेशन का डिस्टर्ब energy our smart grid is a potential threat so different attack methodologies you will use by the cyber कौन करते हैं different attack करते cyber attack कौन करते in our analysis कौन होचे first is the fast data injection attack fast data माने signal का collect करछे then they are transmitting so while transmitting the hackers they will add some additional data so that is known as the FDI data false data injection no suppose अपन load demand का नोट करछे और जनरेशन का व्यक्ति पावर जनरेशन है आप नोट करके सिग्नल को सब सिग्नल कलेक्ट करके that will be transmitted to a centrally located control center so while transmitting the hackers will hack that one and they will manipulate that data मतलब जहाँ जनरेशन होता है उसका wrong information पहुँचे so because according to generation and demand तो control करियो whether power you will increase or decrease so all the control will be affected so finally start shutdown करियो one attack is fast data injection attacks so data is transmitted होते हैं fast next is denial of service this is a one consequence of this denial of service attack due to false data के अन्य को रीजन में that service control जो service का interrupt solar source को अच्छी generate करछे but you are not able to integrate that power to the grid due to the cyber attack so this is known as the denial of service attack अब ये सब देखिए now the coming to the problem now we will take a test system giving track of time okay simple smart grid system we will take and the idea is frequency control with VDC vehicle to grid no in presence of variable renewable sources now one renewable advantage of disadvantage kono they are uncontrolled no solar source are available only when the sun shines no solar radiation is available then only the solar power can be generated similarly wind power it depends on the environment no power hala tama pai power hada both ai gala mane cannot generate the so these are known as variable renewable sources agur kon thila power generation hotula thermal power ro power generate करते so सेटा generation ta control le thila jeti generation darkar seti हम generate करते load का हमारे कंट्रोल में millions of users they will switch on the load agent metric ना हमें गरु बोले गरम वाला ऐसे डाल पड़े so you cannot control the load because load so all the population they are using the load ताकि मन इच्छा ऑन ऑफ करिए जब दरकार ऑन करिए तब दरकार नहीं ऑफ करिए so आगे कौन होता है जनरेशन का कंट्रोल करते to match the load demand कहीं इधर बैलेंस ना हो फ्रीक्वेंसी का चेंज होला माने all the components will be affected क्योंकि वर्तमान जे कोन होची renewable source integration solar electric solar wind environment को डेवलप होची that means generation भी चेंज होची load तो चेंज होची some part of the generation is also change so generation change होची या load change होची but you have to maintain the balance between generation and demand so the problem is more complex now so how to cope this one maintain the balance one thing is AC electrical energy cannot be stored DC का in the form of battery can store but AC you cannot store आप सब AC use करते some stored element will be used like battery energy storage or primary energy storage and mismatch energy storage elements they will store the energy
during high generation, and they will supply the energy during low generation. So in that manner, EVs can also be used as a storage element. So typical smart grid is solar thy, wind thy, and diesel generator because that is more reliable. Think of the both telecom company they are using the diesel. The diesel is 100% sure. Solar source use and wind source there may not be power may not be available. No? Environment dependent. Power halal wind turbine is the diesel generator the diesel store will get the power 100%. So the emergency diesel backup the price emergency. And for storage, fuel cells or energy, EV is also part of this storage. Private energy storage system, battery energy storage system are used. So typical smart grid every system. So the renewable sources are typically varying in nature because they are environment dependent. And load demand also varies randomly. So power imbalance occurs which causes the frequency variation. So continuously power imbalance occurs, the frequency continuously change. So how to maintain the frequency? All the controllable sources called diesel generator or the energy storage system. That power supply control kare. Okay. Power control kare na kitna badhega kitna kamega depending on the generation and load demand mismatch. So sethipai hum controller use kare. So coming to the root cause, why frequency tends to vary? Because frequency is closely related to the real power balance. So during normal operation, the real power balance means power generation is equal to power consumption. Power ke consume korchi load or losses. And AC energy cannot be stored. No. So it is transported at almost velocity of light and it is not being stored continuously. And all the rotating parts possess the kinetic energy using the rotor of the generators. This is the normal operation. What is the theory? Now, frequency means Pn by 120. Number of poles and the speed. Speed means generator speed. Speed rotating mass means the kinetic energy is what the load speed and frequency for example, the cycle आज जोड़े संगा ऐसी बस पर तो कौन हो स्पीड है slightly कमी जो the load का बाहर पड़ रहा है स्पीड है बढ़ी so same thing will happen here if you connect electrical load speed will decrease and the generator frequency will decrease so frequency is an indicator load का बढ़ रहा था कम so due to this the frequency changes. So if the load demand is suddenly increased for a series of steps, now the power balance is disturbed. So if the generation is less than the power consumption, okay, then the generator output should be increased. If it increase mechanical system is slow, it takes time to respond. So initially the energy is dropped from the rotating mass to meet the increased load demand. So rotor speed and hence the frequency decreases. That means if the load demand is increased, finally the frequency decreases. So what by how the explain because the energy is dropped from the rotating mass, and when the energy is dropped, its speed decreases. The opposite will happen. The frequency can be maintained also. That is smart grid. So next system for typical solar, wind, and electric vehicle integrated smart grid system. This is the system. Some wind turbines are there and some solar sources are there. Equalizer, fuel cell, diesel generator, electric vehicles, and flyable energy storage, battery energy storage for storing. So this is the typical. You can design your own. You can propose smart grid component. Frequency control other issues. Solve to take any problem theoretically first you take a test system
कौन सिस्टम कौन कंपोनेंट अछि तापर से कंपोनेंट करके हमें काम करिवा propose a solution for this problem. This is the solution. So what we will do, so these are the uncontrolled wind power and solar power are uncontrolled. Load demand is load demand is uncontrolled. Controlled source for energy storage, flywheel battery energy storage, electric vehicle and diesel generator. These are the controllable source. The controllable source they should either supply the power or draw the power depending on our requirement. So to make it automatic, we will design a controller. The controller output portal is the controller output is energy storage, EV, flywheel and diesel. These are the power is controlled. These are the controlled using a controller. And for this analysis, it is called simplified model. So first analysis using MATLAB model transfer function model of each devices, each component. Model you will develop the Simulink model. It is a model that develops. Next, frequency control with EV. So EV रो model निकलता है. EV रो model अपने roughly speaking, EV, what is the battery capacity and how many EVs are available? This is the main important. No, EV टा भी हमें how define करिए मतलब controllable EVs. Okay. सब EV को control करिए. For example, EV रो battery टा अच्छी 10%. 10% अच्छी तब वो energy draw करा हो. If the battery energy is 80%, now we can draw the power cell. So now it will come under controllable state. Similarly, battery charges EV का charge है to say 100% charge है. 100% charge है potential energy of store draw करियो. Second supply होगी. No. So now also that is not controllable. So how many controllable EVs are there? Some EV owners they will say that नहीं मोरा 80% अच्छे से ना मैं supply करिए. नहीं मोरा दरकार emergency में use करिए. That is not controllable. So how many numbers are controllable? That information is important. And for a particular range ले only the EVs can participate. ना हम supply करिए और draw करिए. ये तो particular range maybe 20% to or 40% to 90% तक है. 40% to 80% ये range है ताकि बहुत पहले बात करें. Because already 100% है वाला ना draw करते हैं. ताकि only they can supply. Similarly, very less यदि अच्छी 10% or 20% ताकि वो supply करते हैं. Only draw करते हैं. So हमें देखिए controllable EVs and battery capacities. ये सब लेके कोई मॉडल है. Each लो energy कितना store करते हैं. ये different states है. Charging, driving and controllable states. ये देखिए कोई मॉडल करेंगे. So what is the total energy model? So all these informations are taken. So it take into model. And number of controllable input at a particular time. So particular time में तो change होती है. For example, battery का लगी charge है. अगर between 40% to 80% है ये participate करेगा. 38% अच्छी माने से participate होती. इस समय पर ता charge 40% है. मतलब ना that will participate. So all are function of time. With respect to time, मतलब battery टा 40% और 45% अच्छी से participate करती. So ये energy supply कर रहा है. ता charge का कमी below 40% है लगने से और participate. So all are function of time. So number of controllable units with respect to time they are calculated and the energy stored model is developed. Now coming to electrical problem, frequency control in smart grid. So a proper control strategy is required for controlling these actions. What action? How to control the output power of the controllable sources like energy storage, battery energy storage, electric vehicle and diesel generator. The power output को कितनी control करें? कौन पे control
variable is variable, so we will control the remaining generation source using a controller. ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବା ଆମେ ଗୋଟେ controller use କରିବା PID or FOFPID controller use କରିବା ଆଉ controller ମାନେ for example ଯଦି PID controller use କରିବା ଯଦି higher semester or faculties they can know PID ମାନେ it will be proportional term KP I will integral term K and derivative term KD. So what should be this KP KI KD value? Error ta मैं note करतो है जब frequency change ना हो error frequency change ना continuous monitor करेंगे frequency change यदि कोबिला less than 50 Hz है माने हम सब generation में power बढ़ेगा frequency change positive वाला माने generation में जो अधिक वाला all controllable sources power covered or they will draw the power as per our requirement. So what is additional automatic controller will be used. Like simplest form of controller is PID. PID controller जो करेगा मतलब KP KI KD जाता है से दिन value के बाहर करेगा से दिन मतलब नाम है यानी artificial AI techniques में apply करेगा. So our objective was minimization of frequency error. Whatever may be the condition, the error should be minimum. So control system will have generally the criteria we use for integral based criteria, IEC criteria or ITE criteria. So this IEC criteria should be minimum. So that we will calculate. That we have design. And how to get advanced controller जो दिलवा वाला FOFPID, fuzzy PID, तो fuzzy based fractional वाला fuzzy PID. So fuzzy logic also part of our coding. So we design करिया fuzzy logic based controllers. So this is the controller parameter KP, KI and fractional parameter. This is the fuzzy logic and KP, KI, KD. So these are the gain values. These gain values now we want to find using some technique, some AI technique or optimization technique. अब fuzzy part माने सेटा में rule based technique. हमें rule based technique you to write. Okay. If error is this much, how much you should use this? Error तो आपको fuzzy जैसे ये जानना. Fuzzy ना हो तो ना using language we will try to solve the problem. Sometimes language is better. It will convey better clear idea. हमको जल्दी हमें engineers माने we are more interested in the numbers. Height is 6 feet माने हमें tall बोलते हैं. That means less than 6 feet is short. No. So जब हम pure set use करेंगे हम define करेंगे. हम define करेंगे those who are 6 feet or above they are tall person. Less than 6 feet माने short person. जो डाला 5 foot 9 inch 5 foot 9 inch 5 foot 11 inch मतलब आपको हम डिफाइन करिए शॉर्ट अगर 4 feet है तो डिफाइन करिए शॉर्ट नो बिकॉज़ अब टारगेट 6 feet है तो 6 feet 1 inch है ना टॉल so that means there is no difference between 5.11 and 4 feet and these are the short category also किंतु 5.11 and 6 ର difference ଅଛି ଗୋଟେ 1 inch difference ରେ ତାକୁ tall ବୋଲି କହୁଛ ଆଉ short ବୋଲି କହୁଛ so it looks short ସେଥିରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା fuzzy word use କରିବା 5.11 କୁ ଆମେ almost tall instead of say short we will say almost tall short 4 foot କୁ very short 5 foot 9 inch ଖଣ୍ଡେ ଅଛି ମାନେ 5 foot 5.5 inch ଅଛି ମାନେ average height ଏଭଳିଆ ଯଦି word use କରିବା that will convey a better meaning. No. So a concept ଆମେ fuzzy ରେ use କରୁଛୁ. Sometimes word will convey a better meaning than the numbers. Simply number use करी word करेंगे. For example, it is very hot. It is also a fuzzy word. ये जो very hot 30 degree वाले hot नहीं पर 40 degree वाले hot है. कारण आप जो बोले 10 degree से लेकर hot करो. ऐसे बोले minus temperature है. ये जो 10 degree है वो cold. So what and then सबोला use करते हैं fuzzy depending on our requirement we can use the fuzzy. So simply fuzzy logic controller use. अगर washing machine में fuzzy logic controller आज के लिए use. Depending on input, यदि कि बैटरी कपड़ा पड़ला
physiology which takes the input of change in frequency signal टा दोचे frequency टा बढ़ुची ना कमुची से signal ला घरिया दोचे so कोर range में बढ़ुची केते बढ़ुची ये सब information gather करूची physiology से अनुसार से कहबो तो आल का controllable source टा अबार बढ़ेबो ना कमाबो कोन करिया करता so that will decided by the physiology और एक गेन जब अछि तब आप यूज करियो ऑप्टिमाइज करियो using some technique. So this is a part of design problem. ये problem ना तो try करें समझा रहे any design problem we can solve using the optimization technique. Everyday life में हमें design problem का solve करते हैं. For example बहुत सारे representation तो कोई नहीं आ सकते. So we have applied optimization technique. What is our objective? Objective माने area of this means पहुंच नहीं चला objective. What are the variable? Variable माने possible ways रास्ता देखना. तो सीधा आसपेलो ये सुबह के आसपेलो अच्छा सुबह रहेगा आसपेलो कि पार्टी में रहेगा आसपेलो किसी को रूट रहेगा आसपेलो different objective माने हम कम टाइम में पहुंचना. चला first you try to identify what is your objective. Objective is to minimize the time. कम टाइम में रहना. What are the search variable? What are the options? ये रास्ता अच्छा से रास्ता अच्छा से रास्ता अच्छा. जब देखिए जो रास्ता रास्ते से पूर्ण कम टाइम में पहुंचे ना सेटा that is our optimized way. So सबको हमें ये यूज करते हैं. हम के लिए यूज करते हैं. सेटा बांटे ऑब्जेक्टिव बस. पेन देता लगे क्या? कार को देखिए. कार के लिए जो देखियो various ranges are available. So depending on our requirement हम क्या करना. Our objective is our efficiency, fuel efficiency टा बढ़ते हो. जो स्विफ्ट डिजायर के काउंटर के लिए. आज जो कोई लग्जरी रहता है पैसा चेता है जैसे BMW कोन ए बढ़िया सो व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव शुड बी नोन टू अस नॉट टेकिंग ए डिजाइन प्रॉब्लम हम सब ठीक है भले देखा जाए ए कंपनी कॉन्ट्रास्ट करी ए कंपनी need to design a cylindrical cap that can hold 475 cubic centimeter of fluid. What are the dimensions of the cap that requires the least amount of material? अपन गोटे कोन करे कैन गोटे डिजाइन करे को दिया कैन का कंपनी करियो तार ऑब्जेक्ट तार एम अछि 475 मिलीलीटर ऑफ क्यूब नो सेति के तार कैपेसिटी को दे दी इतनी कैपेसिटी से रही 475 मिलीलीटर फ्लूइड रखियो आ तार हाइट के हबो रेडियस के हबो so that the amount of material is least so that यदि material पड़िबो cost बढ़ीଯିବ so using least amount of material how to design a cap किंतु से cap capacity फिक्स अछि दी capacity करो एटा यदि प्रॉब्लम एटा एनी प्रॉब्लम यदि अछि using our optimization technique you can solve so first is to identify what is your objective is to minimize the material required. Want to minimize करियो तो चाहते और want to maximize करियो चाहते. Material का ऊपर डिपेंड करियो तो कैन डिजाइन देना बा. Area at the top, area at the bottom और साइड एरिया. ये तीनटा एरिया ऊपर डिपेंड करियो. Area at the top माने pi r square, bottom pi r square. इधर 2 pi r h. ये टोटल तीनटा हमारा मिनिमम हो. तो मटेरियल कम मटेरियल लगे तो कॉस्ट कम है. वेरिएबल कौन रेडियस एंड हाइट रेडियस कहता हो हाइट कहता हो ना 475 मिलीमीटर पे लार्ज रेडियस कम हाइट कर परियो और लार्ज हाइट कम रेडियस कर परियो एरो केम सॉल्व करियो हमें फर्स्ट ला हम कांस्टेंट होची pi r square h volume should be equal to 475 and surface area is our objective it should be minimized 2 pi r square plus 2 pi r h. देखो 2 pi r square माने area at the top, area at the bottom और side area. से तीनटा एरिया में मिसेला ताको मिनिमाइज करेगा. किंतु कांस्टेंट होची pi r square h स्क्वायर 475 हो. तो इतने हो गया मैं यूज करिए आप प्रोग्राम छोटे प्रोग्राम लेके अपने यूजिंग मैटलैब. So the variables are radius and height. So r is the first variable, height is the second variable.
y रे जहां भी असाइन करियो इला MATLAB जे यूज करछि से जानि करबे MATLAB यूज करके से बात करे 2 pi r square plus 2 pi r h এটা হচ্ছে সারফেস এরিয়া এটা ইনক্লুড করবে 2 pi r square plus 2 pi r h and constant যেটা আছে that is used as a penalty margin हाई वैल्यू देंगे this pi r square h minus 475 समझा मैं से so out of this the surface area of the cone is first part 2 pi r square plus 2 pi r h the first part and penalty is the second part तो हाई वैल्यू यूज करते and 2 pi r square h minus 475 then what about the search technique optimization technique means it will search now r and h value so that the surface area जो expression देजे y is minimum कि तो हम constant আছে we should use only those r and h value when the हम volume calculate करो 475 हो so a part का जो volume is equal to 475 माने a part का 0 है એટલે કે when pi r square h that means volume is equal to 475 1000 में मल्टीप्लाई करके से ये कलर because a part का 0 है so this part will be 0 a part का कैलकुलेट होगा अब when this is 0 होनी माने y का हाई वैल्यू पर अब मिनिमाइज कर दियो so हम लोग ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक यूज करछे जोले MATLAB इनबिल्ट अछि जेनेटिक एल्गोरिथम so genetic algorithm that is inspired by our human development so we dekhi dibo day by day the generation is getting smarter no how much time is left for me so we will apply optimization technique which is inspired by the human evolution hum dekhi dibo papa doctor ma doctor mane most likely child will be also a doctor no तो बापा बहुत ब्रिलियंट अछि मां बहुत ब्रिलियंट अछि बोले चाइल्ड भी बहुत ब्रिलियंट है नेक्स्ट जनरेशन रे आउटी बॉडी बॉडी जाए ना हाइट का दिनो दिनो बॉडी बॉडी नो हाइट दिखे 6 फुट 1 इंच अछि वो जे के 11 फुट से 6 फुट देने चाहे मोस्ट लाइक समटाइम्स ऑपोजिट में occur but it is very rare सेटा भी हमें जेनेटिक एल्गोरिथम रे नियम तो जेनेटिक एल्गोरिथम ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक because each generation you are getting better na to 100 वर्ष तले हम जेमति लिविंग करते जेति नॉलेज थिला but our generation we are more knowledgeable our future generation will be again more knowledgeable than us na for example we compare करते जे तू समय देछि मो कोइ दउ we are more capable we utilize करछो कि नहीं that depends on you utilize your time you will get better knowledge than us our generation day by day the generation smart है so same concept रे हम genetic algorithm that is optimization technique use करी करत so GA will search only those r and h value for which this part is 0 okay so ये part 0 है ना minimum actually function is and GA will minimum so it is 0 है ना remaining part out करे से minimize करो এটা দেখি খুব রিজাল্ট भी देखे छिके you write a simple program no you can take any problem like this will be a big problem no big project भी अवेलेबल है some problem लेके using optimization technique you try to solve so a simple program is written using MATLAB to solve that design problem okay ये very long term का है ये बड़ा रिजल्ट है ना कोडिए तरह रन करी कोडिए तरह देखियो r value h value volume and material required so r j any technique random रो स्टार्ट करे random population रो स्टार्ट करियो तापरे algorithm का इवॉल्व हेई छि सेत में each time we do run you may not get the same solution but close to a value you will get no so always the results are not same ये ऑप्शन आवा होने तो देखिए सब के साथ वॉल्यूम का 475 फोर्स है whatever may be the r and whatever may be the h value the volume is 475 for the material का कैलकुलेट कर से material पूरा ये फॉर्मूला यूज करके
pi r square plus 2 pi r higher square material बाहर हो तो देखो ये वैल्यू का जो कम आस 337.808 so if this is the radius and this is the height so the volume will be 475 material record is least so it will मतलब project भी करते हैं so similarly one optimization technique we will apply our problem मतलब कौन what is our objective to minimize the frequency deviation what is our search variable the control parameter kp ki kd parameter कौन हो यदि r and h search करछे यदि kp ki kd ର value search करियो यदि material को minimize करछे सेटा में error को minimize करियो frequency टा minimize करियो सेटा में करियो design problem after the break deep break okay question from your side sir more a question अछि हमरा इंडियन स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी 50 आपण पढेले फ्रीक्वेंसी कंट्रोल हमरा जो सेगमेंट था फ्रीक्वेंसी कंट्रोल अच्छा अमेरिकन हैला 60 तो तांका इभिटा हमें एठी यूज करे को यूनिट टा को कंप्रोमाइज करे पड़े ना किसी दरकार पड़े नहीं ना चेंज करे पड़े 60 एच में जो डिजाइन है तो 50 एच में अलग डिजाइन अच्छा तमन फॉरेन गाड़ी हम किनिया पर भाबिबो ना भाबियो इंडियन मार्केट में डिजाइन कौन थी that will be used in this frequency केतना डिवाइस डायरेक्ट यूज करो केतना डिवाइस ता कोन बहुत frequency स्लाइड वेरिएशन वाले भी करियो माने से कंपोनेंट में करियो इंडिया मार्केट को बेस रखी तक फॉरेन एटा भी गाड़ी आगे देखते का राइट हैंड था कार लेफ्ट हैंड था इंडिया वासलाडो इंडिया रो रिक्वायरमेंट हो सकता है अच्छा इंडियन रोड रिक्वायरमेंट हां ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଆମର ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ ଷ୍ଟିୟରିଂ ତାଙ୍କର ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ ଷ୍ଟିୟରିଂ କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଯା ବିକେ ତାଙ୍କ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ ଥାଇଲେ ବି हां ठीक है ସେଟା ବି ଆମ ରିକ୍ୱାୟରମେଣ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ କରି ନାହିଁ थैंक यू ହେଲା ଲିବ୍ରେ ଗଛ बड़ा ना पिले माने हमें बसिथा जस्ट 10 मिनिट ब्रेक हमें सार माने टिके टी ब्रेक करके आसुछंती तमे नि पानी पानी कोन भी उधर दे आसु 5 मिनिट समस्त बसी पटी नेक्स्ट सेशन आ आओ 15 मिनिट में चला असले Okay. Now coming to
स्क्वायर वैल्यू पॉजिटिव ये टोटल आईएससी वैल्यू हो जो मिनिमाइज करेगा पॉजिटिव एरर हो कि नेगेटिव एरर हो बोथ पे से काम करेगा खाली सम ऑफ एरर बंद हो ना ग्राउंड रिजल्ट पाइसे आईएससी एरर सो देते लिखिए आईएससी इज इंटीग्रल ऑफ चेंज इन फ्रीक्वेंसी डेल्टा आपने चेंज इन फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज আছে 51 हला आपने 1 हर्ट्ज चेंज है সেটা উঠে এরর 49 हला आपने अगेन 1 चेंज है সেটা भी एरर सो 49 দরকার নেই 51 দরকার 50 দরকার तो ये एरर रो आईएससी वैल्यू को मिनिमम करो যদি आईएससी वैल्यू मिनिमम আছে মানে चेंज इन फ्रीक्वेंसी का मिनिमम बराबर हम कौन करेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन चेंज करिए कंट्रोल एक्शन का भी चेंज ऐड करिए कंट्रोल एक्शन भी कम करियो चाहते हैं कंट्रोल यदि बेसी करे वेरिएंट अधिक हो कंट्रोल में खराब हो जाएगा लाइक करता करो चलिए बोल ठीक है देखिए आईएससी इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ डेल्टा एक्स स्क्वायर नॉट j इज इक्वल टू डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा u स्क्वायर बाय k करियो तो कंट्रोल एफर्ट में जो मिनिमाइज करियो डेल्टा u भी करियो एवढे কিছু ऑब्जेक्टिव अपने देरो जिन हम कैट डिजाइन में करथिले तार सरफेस एरिया बाहर करथिले सरफेस एरिया को मिनिमम करो सेटा हमर ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट आईएससी ऑफ कंट्रोल एरर एंड फ्रीक्वेंसी डेविएशन शुड बी मिनिमम वेरिएबल करो ना कंट्रोल पैरामीटर के वैल्यूज केपी के केडी और पॉजिटिव जो छी हमने तारो जो स्केलिंग फैक्टर इनपुट स्केलिंग फैक्टर सब मिनिमाइज करिए और पर्टिकुलर रेंज था से रेंज रे मिनिमम व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू जनरली 0 to 2 मैंने हाई वैल्यू ले रियल रेट दिया रखो तो 0 to 2 इज द यूज ये भी हमें सर्च करिए मिनिमाइज आईएससी सब्जेक्ट टू दिस वन टेक्निक आप लोग अप्लाई करिए एट कॉल करछले जे तो लोग पेपर रिजल्ट रिजल्ट पेपर to use like you say पूरा प्रॉब्लम में जेनेटिक एल्गोरिथम ऑप्टिमाइजेशन यूज करते हैं अब तो नो ऑप्टिमाइजेशन लाइक स्नेक ऑप्टिमाइजेशन हम यूज करते हैं स्नेक ऑप्टिमाइजेशन का अलग जने अप्लाई में प्रपोज करछ ताको आपण इंप्रूव करि परियो सेते ताको इंप्रूव कराय छै पेपर पब्लिश करा को दिसु करता व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन ये टेक्निक का तो ऑलरेडी अछि तो खाली यूज करो ना नो टेक्निक यूज करली मॉडिफाइड करे जो अभी वाला so modified snake optimization technique विषय को डिटेल कोई भी नहीं so let's got some steps ताको मॉडिफाई करा है तो सिंपली खाली कोई तो मॉडिफाई करछि बोले बड़ी द प्रूफ मॉडिफाई का ओरिजिनल तो भलो किछ फास्ट प्रूफ करियो ये चेंज कर दो एमिति नहीं एमिति जीवा ये रास्ता नहीं ये रास्ता रे जीवा ये रास्ता तो कौन बेनिफिट पहुंच जल्दी पहुंच जाऊ बेटर सॉल्यूशन पहुंच ना टाइम कम हो कौन ଗୋଟେ बेनिफिट ଥିଲେ ସେଟା କରିବ ନ ତ ପୁରାଟା ଭଲ ଥିବ ସେତେ ଏଠି କଣ କରନ୍ତି स्टैंडर्ड बेंचमार्क फंक्शन आ जाए स्टैंडर्ड बेंचमार्क फंक्शन रे हम अप्लाई करके देखिए से बोलो स्टैंडर्ड प्रॉब्लम रे इसका काम କରୁଛି ता तो मॉडिफाइड करले आप बेटर रिजल्ट पाउँछ से स्टैंडर्ड प्रॉब्लम रे ओरिजिनल टेक्निक मॉडिफाइड टेक्निक एटा का अप्लाई करें एटा अप्लाई करले जस्टिफाई करियो जे हम मॉडिफाइड टेक्निक करो कॉम्प्लिकेशन कॉलम छोड़ खाली सिंपल टेक्निक सिंपल अप्रोच सिंपल बिहेवियर कंट्रोल मतलब प्रॉपर कॉम्प्लिकेशन ना और नोवेल कंट्रोलेशन किसी ना है कोई आबार टेक्निक तो टेक्निक ना मॉडिफाइड करा है नेक्स्ट स्टेप कौन करा है दिस इज द स्टेप मॉडिफाइड टेक्निक आप इट को जो ए जो बेंचमार्क फंक्शन जालगी रेंज -100 to +100 मिनिमम वैल्यू का नोन ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो वैल्यू का होची 0 ये प्रॉब्लम का कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन सब थाई एटा को जो यूनिमोडल बेंचमार्क फंक्शन ये कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन थाई एटी हम से टेक्निक का अप्लाई करियो बोथ ओरिजिनल और मॉडिफाइड टेक्निक प्लस अदर टेक्निक जो अवेलेबल अछि वेल नोन टेक्निक अप्लाई करके रिजल्ट देखियो को टेक्निक का भलो रिजल्ट होची तो जो मॉडिफिकेशन प्रपोज करियो तो भलो रिजल्ट देबो टेस्ट फंक्शन then only you can justify na modify kala ami better result house so eta hochi set of unimodal functions simply only प्रकार था unimodal माने गोटे खाली मैक्सिमम मिनिमम
है मल्टी मॉडल मेनी मैक्सिमम मिनिमम है how you complex मल्टी मॉडल फंक्शंस ये कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन होता है so x वैल्यू को सर्च करो अब डायमेंशन का अर्थ है 30 डायमेंशन यदि PID या करेगा AP KI KD so डायमेंशन इज 3 तीनटा वेरिएबल आप सर्च करो से जो डिजाइन प्रॉब्लम रे हमर डायमेंशन थला 2 ना रेडियस एंड हाइट ये दिला सर्च करियो तो वो दिला सर्च वेरिएबल इज नोन एज द डायमेंशन से देश को 20 वेरिएबल or 30 वेरिएबल any वेरिएबल then वो है 30 needs there is a search and the radius and height को हम सर्च करते हैं इट्स इन there is a value को सर्च करें हम कंट्रोलर रे पांचला वैल्यू सर्च करें KP KI KD और डेटा स्केलिंग करते हैं 5 वेरिएबल so that is known as the dimension of the problem the 23 function match तो फंक्शन नहीं की जोड़ा की नोन वैल्यूज ऑफ नोन ये 0 0 है कितना टिक अलग है 80 शुड बी मल्टी मॉडल फिक्स डायमेंशन टिक अलग है हमें अप्लाई करला भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन वैल्यू एति आसी हमें ऑब्जेक्ट अप्लाई करला ऑब्जेक्टिव फंक्शन वैल्यू 0 आसी 0 जति आसला क्लोज टू 0 आसी क्लोज टू 0 आसी हम काम करूची बोली मैं कहि परकी एति सब अप्लाई करला ता किछ देखा जाउ नहीं ना एस और नहीं कर एति कल देखि दियो बाबू आसे लगे हम टेक्निक पढ़ला MSO ओरिजिनल टेक्निक SO प्लस अब कतरा टेक्निक GW फ्लाइंग मोशन PSO GSA अब कतरा एग्जिस्टिंग टेक्निक एवडा कंपेयर करले जाई तो पेपर कर दो पेपर करियो जे रिसर्च कोर्स ए देखो एटा आछि तो गुटे वैल्यू कर देखियो एटा अछि मॉडिफाइड into 1 minus 3 এটা 4.1 4.13 এই ভ্যালুটা কম হচ্ছে এটা হচ্ছে 10 to power 2 হচ্ছে এটা 10 to power 2 হচ্ছে মানে whichever value is আমি জানি যে 0 is the answer 0 रो क्लोज जे দଉଛି সেটা বেটার হলে ক্লোজ করতে এবারে কম্পাইল করা কি ফার্স্ট তো টেকনিকটা তো জাস্টিফাই করে দিচ্ছি এই টেকনিক ইজ বেটার টেকনিক এর বলছে এটা স্ট্যান্ডার্ড ম্যাক্সিমাম ফাংশন নিয়ে আছে অরিজিনাল টেকনিক মডিফাইড টেকনিক আও কতটা টেকনিক এই যে উপরে তার রেজাল্ট লাগা আছে A2 শুরু বলে যে মডিফাইড টেকনিক বলে বেটার রেজাল্ট হচ্ছে আর রেজাল্ট 23 টা ফাংশন দেখে তারপরে কন্ট্রোলার পকেট BID ইউজ করিও KP KI KD ভ্যালু কম করছে IAC ভ্যালু কম করছে 3.5 কম आउट ऑफ टेक्निक पकेले तार वैल्यू के पास ए टेक्निक मॉडिफाइड टेक्निक पकेले बकेट वैल्यू पास जरा आईसी वैल्यू कम माने सेटा बेटर 3.0 के पास सो दिस इज द बेटर देन द अदर टेक्निक आप कंट्रोलर चॉइस करो लॉजिक PID और फ्रैक्शनल लॉजिक PID तो देखियो आईसी वैल्यू से यूजर कम कर होछ 3 पॉइंट के आसला 2 पॉइंट के आसला 1.6 माइनस सो ये यूजर जस्टिफाई करके first you justify that technique is better next the controller is better PID और PID लेकिन रास्ता ये जो रिजल्ट आया पर next you analyze technical के प्रॉब्लम जोक्स with respect to general some jokes are the techniques are compared the proposed technique का सब to go up to solution if red का जो best red माने MSO the best will prove करा comparison तो बोला anything माने व्हाट तो क्वेश्चन पहुंचाइयो तार आंसर बात तो सपोज ये टेक्निक का यूज करो काहे से टेक्निक यूज करो सॉर्ट आउट टेक्निक ଅଛି से टेक्निक काहे यूज कि जस्टिफाई करियो कंपेयर कर ताको निका 5-7 हाथ कंपेयर करियो तो काबेटा बोले होची से में टेक्निक कंट्रोलर जो यूज करो व्हाई दिस कंट्रोलर अलग करते कंट्रोलर नबो आज ना कंपेयर करियो तो से कंट्रोलर पे कंडीशन that's why this controller is proposed. Comparison is important.
डॉक्टर माने पाठ पढ़ले कौन पढ़ती फास्ट कहलो रोगर लक्षण गुड़ा पढ़ते दैट इज आल्सो प्रॉब्लम इंजीनियर माने होती डॉक्टर ऑफ नॉन लिविंग बॉडी डॉक्टर माने होती डॉक्टर ऑफ लिविंग बॉडी तो लिविंग बॉडी पाई बहुत सपोर्टिंग एड अछि इमेजिंग स्कैनिंग अल्ट्रासाउंड ब्लड टेस्ट पूरा सब अच्छी किंतु तमे जो डॉक्टर हो तम पेशेंट कहि परिबार कैपेसिटी नाही तो तमे निजे बुहाइबो निजे तार एनालिसिस करे मेडिसिन देखियो पुनी संगे संगे तार सॉल्यूशन दो तो सार को पर्यंत कहि चाहछनी कंट्रोल सिस्टम ऊपर केपी केआई केडी तमे सब जानि पार मतो जदी बाउंस करथो लोअर सेमेस्टर पिला हायर सेमेस्टर पिला जानि जो मन कंट्रोल सिस्टम पढछनी बट पीआईटी P means proportional, I means integrate, E means differentiate. तमे गोटे काम करिया चाहछो दी जण भीतर कंपैरिजन करो सार का भीतर के बड़ो के भलो के अधिक जानि दैट इज द proportionality relationship क्रिएट हैला ता भीतर हम जानि परबा मोटू से कोथरे अधिक आछन कि मो ताका को कोथरे कम अछि दैट इज से जो मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस दैट इज कॉल्ड एज एरर दैट इज केपी केआई integrate means that is summation हमें इंटीग्रेशन का अर्थ कौन गोटे छोटो जदि अपर लिमिट हम लोअर लिमिट भीतर इंटीग्रेट कर देबा बड़रा हमर आइडिया आसी जाय बा एरिया आसी जाय सेमति इंटीग्रेट अर्थ हमें मिनिमम गोटे भात को हमें टेस्ट करे एंटायर भात आंडी की टेस्ट करे गोटे भात दैट इज इंटीग्रेट करले गोटार थिकनेस ब्रेड की केते से देखला पर हमर एंटायर हांडी को हमें जानि पर सेमति इंटीग्रेशन अर्थ से इंटीग्रेशन नेला बेले तार डिफरेंस जो आपको दैट इज केआई देन डिफरेंस कोन ना बडोटा हमें छोटिया स्ट्रिप पे कंसीडर पाई परिबा मैक्सिमम टू मिनिमम इंटीग्रेट का जस्ट उल्टा तो केपी केडी केआई कंट्रोल सिस्टम न पड़ दिले तार एरर सिस्टम अछि सिग्नल सिस्टम अछि इनपुट अछि आउटपुट अछि इन एंड आउट दैट इज बैलेंस प्रोसेसिंग हां जब तार भीतर सार पढौ जोटा सूट करछे हम पाई हमें सेटा से टेक्निक यूज करबा से ऑटोमेटिकली से देखिबो ओवर कोन डिफरेंस है ओके थैंक यू सर ओके सो आपका रिजल्ट्स हम पाइले मतलब एनालिसिस करे रिजल्ट जब पाइले ठीक मानो पिक्चर एनालिसिस करे ग्रुप को लगे टेक्निक भलो ए कंट्रोलर भलो तारे ना लागे हां लोड डिमांड ना सपोज रैंडमली चेंज कोले चेंज होची को जेवला चेंज होची स्टेप बाय केतलो पडुची केतलो कमुची पुरे आमे सिग्नल जनरेट कर 0.5 दिला के सब के सेकंड 0.6 है कमिला तो बढ़िला होल्ड कमिला सो वेट पावर वेरिएशन होची थोड़ा कमिला और बढ़िला कि सोलर पावर तो कमिला तो बढ़िला है ये बोले यदि आपने मतलब हमारा कंट्रोल सिस्टम के लिए रिड्यूस कंट्रोल प्रोजेक्ट ये तीनटा नंबर कराई दो पीआईडी हां अंदर गले हां ये मतलब नंबर तीनटा आपले यारो एरर का मिनिमम अछि जब हम जो प्रपोज करछे फ्रैक्शनल ऑर्डर और पीआईडी सेटा इज बेटर देन द पीआईडी एंड पीआईडी सब को नेक्स्ट एनालिसिस करेगा में अंडर साइबर अटैक ए सिग्नल सोलर सिग्नल का किस समय में 0 है इट इज डिनायल ऑफ सर्विस 50 to 100 सेकंड के डेटा 0 है साइबर अटैक गोटे नवा कांसेप्ट आसी ता पूर्व हमर साथ थला एंटीवायरस हां वायरस वायरस असले कंप्यूटर हैंग कर वर्तमान साइबर अटैक माने थेफ्ट ता भीतर साइबर थेफ्ट हेला पर ए जो ईबी रे आपण सॉफ्टवेयर सब यूज करू से सॉफ्टवेयर जदी प्रॉब्लम आ रही हैला दैट इज कॉल्ड एज साइबर अटैक वर्तमान सार पर गोटे नवा कांसेप्ट से साइबर अटैक रो प्रिवेंटिव केमते हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कर परबा दैट इज कांसेप्ट ए सोलर सिस्टम रो साइबर अटैक तार एम कोन होला जे कि हठात साइबर अटैक हला माने फ्रीक्वेंसी एरर का चेंज हो छै ताको के कंट्रोल करछे ए आज प्री कंट्रोलर्स डिफरेंट साइबर अटैक नहीं चलते एटा साइबर अटैक
ए सोर्स टा 0 हो खाता ले गोटे रेगुलर चेंज होला साइबर अटैक ता आंसर बाहर सार न कहउछंती जदि किछि क्वेश्चन अछि खाता रे देखो साइबर अटैक केते प्रकार केमिति हुए तार वीडियो ऑडियो सब गुडा सुनो तार हम क्रिएटिविटी को एटा 200 सेकंड रे साइबर अटैक का वेट फार्म यदि वेट फार्म वाला तार पावर टा 0 है से देखियो पेड यूज करछे वीडियो से बहुत वेरिएशन होछ क्योंकि अजी जे तळे यूज करछे तार वेरिएशन कंपैरेटिवली कम होछ सो वेरिएशन तो एरर आईएसी एरर सब एट दे जाउछ और मेथड कंट्रोल अप्रोच पीआईडी करे कोन होछ अजी पीआईडी करे कोन होछ हमें अप्रोच फ्रैक्शनल को जो पीआईडी करे कोन होछ एटा नंबर करा होछ ये डाउट आ सकता है both solar and wind power plants cyber attack. Next मिलेगा false data injection. So data जहाँ transmit होती है नहीं false data ऐड है. देखो because की variation continuous variation होता है. क्योंकि PID ले अधिक variation होती है. Proposed method ले comparatively कम variation होती है. और IAC value सब बाहर आ रही है. Proposed report आती है. और PID report आती है. Before attack and after attack analysis arise. After attack ale so error so body use na the three data ta protein ne the time delay communication को affect करा सकता cyber attack अगर signal transmitter time suppose 10 millisecond लगेगा total 30 millisecond लगेगा 30 millisecond लगेगा तार affect का तो तार affect को all solar ये जो डेटा कंपैरिजन सब कंपैरिजन ओरिजिनल जनरल कन्वेंशनली पीआईडी यूज करते पीआईडी का कोन होची हमें जो ग्लूकोज होजीएस करछो तार कोन होची न्यूमेरिकल डाटा पर्टिकुलर टाइम डिले तो कल कोन होची एला सब आप एनालिसिस करन सेंसिटिविटी एनालिसिस एंड स्टेबिलिटी एनालिसिस आ डिटेल आ जाती तो आप कमिंग टू द लास्ट स्लाइड. The performance analysis of glucose modified snack optimization algorithm by using benchmark function. After you compare this one, so these are the standard procedure. You write a paper, always try to introduce your number contribution code. Existing technique, existing controller, existing test system color, difficult to publish the paper. किसी को improvement करियो जैसे technique रे improve करो और controller रे improve करो और analysis रे improvement दियो. से एक बार एनालिसिस कर अलग अलग करके तमर नोवेल कंट्रीब्यूशन टा हम हाईलाइट करें ए ट्रू वाला है एमिशन टू एप्लाई कंट्रोल डेमोंस्ट्रेट्स सुपरियरिटी ऑफ पीआईडी एंड पीआईडी बिफोर एंड आफ्टर द साइबर अटैक ये डिटेल का या देखियो एक पेपर को पब्लिश रिसेंटली 2025 रे এটা पब्लिश है इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम रिसर्च रे एमएसओ जो optimize the pairing of frequency stability of distributed power system under the influence of cyber attack. ये देखा जाए कि 2025 एक वर्ष पब्लिश है इस पेपर टा अगर देखिए ना आप डिटेल वैल्यू से दे ये तो लास्ट टाइम है गाड़ी बहुत करला मतलब इंक्वायरी दिले कैन आस्क कौन क्वेश्चन अछि पॉजिटिव
से अनुसार बात की ये देखिए तो बात बहुत निकल मैं उधर भी लेकिन क्या लाभ हो तो टाइम को स्टार्ट होगा Professor Panda for your valuable session, 2 sessions, interaction sessions. On behalf of our electrical department, faculty, student, and our outside professors, we are going to felicitate and honor to Professor Panda. Please all of you come forward and stand in queue. In that manner, we will honor the Professor Session-VIII sir. Okay, all of you please come. Final year students, please coordinate. You are not just like guests. On this second day of our 3 days seminar, planning program, this is the 6th session, including from first day to today. It is now 6th session, and our second day, 3rd session. So now Professor Vinod Kumar Sahu sir, HOD, Electrical Engineering Department, Soa University, and our beloved teacher, very excellent person, and always a smiling face, and is effective, always correlated to each and every problem, and immediately the outcome will comes immediately. So you just sir, please come. Awesome. Now we are going to start our second and 3rd session by Professor Sahu sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir, for your being sir. So, for the presentation flow here, so mainly, we will first in few slides we will discuss about what is electric vehicle, uses of electric vehicle, and why do we need electric vehicle, what are the advantages of electric vehicle over conventional vehicle. Then we see how to design an electric vehicle into metal assembly. So that step by step how to design a metal assembly, that was we discussed. So initially, first few slides. What are the slides? First, in total, between around 60 slides are there. So around 40 to 45 slides are related to the introduction of the electric vehicle, advantages of electric vehicle over conventional vehicles. Then last 3 slides what we have, design of electric vehicle using metal assembly. How to design? What are the different courses so that active on the electric vehicle? How the So first one, this is under the presentation flow here. So first one we discuss about brief history about the electric vehicle, when it is started, and what is the present scenario, what is the status of electric vehicle. Then a comparison between petrol and electric vehicle. Then what are the various forces that are acting on the electric vehicle. It is any vehicle actually.
Including any vehicle, these forces will be common to all types of vehicles, whether conventional IC engine vehicle or electric vehicle. Next one is fuel cost comparison. If you go for IC engine vehicle and electric engine vehicle or electric vehicle, what is the fuel cost comparison? Then current trends in electric mobility in India. Then charging infrastructure in India. Then EV charging stations in India. State-wise, how many charging stations are there? Which state of India? That also I will give in one slide. Last one, a small controller server. So this is nothing but the verification flow here. So if you look at the history of the electric vehicle, so before the IC engine vehicle, electric vehicle were there. Look at here, 1980 or 1891, we had the first electric vehicle. 1891. At that time, the IC engine was not there or at the BLDC. So first electric vehicle coming here in 1981. Then next in 1901. So first what I can say is the introduction of the first electric vehicle. Next one, first hybrid electric vehicle. Hybrid means both IC engine as well as electric vehicle motor. Then in 1930, electric vehicle, that one, the popularity each one reduced due to development of the IC engine. Next in 1990s, again what I can say, if you look at your 1990, 97, 2000 and 2008, now we have the popularity of the electric vehicle over the conventional electric. So, the electric vehicle is the first electric vehicle. You can see here, this is the design of the first electric vehicle in 1884. Now from 1884 to we are now in 2020, 2025. Okay. So gradually it has evolved like this. So from 1884 to 2020. Next one is, if you look at here, brief history of the electric vehicle. First one in 1991. I am taking it from 1991 to 2021. In 1991, the commercialization of the battery was there. And from 1991 to 1993, this is the first electric vehicle. It was using this commercial battery. And what the range of the electric vehicle? Only 60 km on full charge. Then from 1993 to 1996, what we had here now is the first is a lithium-ion battery. Electric vehicle or electric vehicle lithium-ion battery. So if you look at here, in 1991, this is a brief comparison of our electric vehicle and IC engine vehicle. So first one, this is IC engine vehicle. Look at the first one here. This one is the IC engine vehicle. So in IC engine vehicle, what we have the fuel tank, then engine, then fuel injected from the fuel tank to the engine, then with the drive. So out of the engine, it drives the car. Similarly, in electric vehicle, what we have the battery. So this fuel tank is equivalent to battery. So battery, then we have battery controller. Battery controller means which one needs how much of electric current. At this speed, how much of electric current it will be delivered to the motor. Like this is called the battery controller. So this battery controller, it will control the flow of the current to different parts of the electric vehicle. So you have the battery controller and then electric motor. Then this electric motor which will drive the electric vehicle. Now, if you look at here, the different forces. Those are acting on the electric vehicles are. So first we have rolling resistance. Rolling resistance, what you can say, this is what I can say, the friction. When the car moves over the road will occur friction. So this is nothing but what I can say, nothing but the friction offered by the road due to the contact between the road and the tire of the vehicle. So first one is, so whatever the torque or output of the engine
rolling resistance, fixed resistance. Second one, aerodynamic resistance. What do you mean aerodynamic resistance? When the car moves, the wind also, what I can say, it will absorb whatever the air, that also puts the pressure there. How to do so? So that is what I can say, aerodynamic resistance. Then to overcome the gradient. To overcome the gradient means, so the car will move over an inclined path like this. So what I can say, the inclined portion, it will also put some additional torque. You need to overcome the inclination. If you are moving through an hilly area, then you need more torque there. So when the car, it moves in an inclined path. In that case, what will have? Will have a gradient resistance. Gradient resistance. Okay, if the car moves horizontally, there is no inclination. This will be zero. This gradient resistance will be zero. Last one is to provide acceleration for the battery. So, what is the meaning of this? Provide acceleration for the battery means any vehicle it gets an inertia. So, if you want to move the electric vehicle, you need to overcome that inertia. Overcome that inertia. Okay? So, this is what I can say inertia force. Inertia force. So, these are the four forces or torques. Those will be acting on the electric vehicle. When the electric vehicle is under moving condition. So, first one is what I can say rolling resistance. Rolling resistance is the friction offered by the road. Second one is aerodynamic resistance is the friction offered by the air. Third one what I can say gradient resistance. Due to inclination. Additional force or torque you need to drive the car over an inclined plane. Last one is what I can say the acceleration of the vehicle. Acceleration of the vehicle is what I can say inertia force. Any body you take or any mass you take, it has only the inertia. If you want to move means you need to apply some force there. So that is what I can say inertia force. Okay, so these are the force that will be acting on any electric vehicle. Electric vehicle or conventional vehicle, these are the force going to be acting. Okay, so how to calculate the different types of forces there? So look at here, there is a formula there. How to calculate all these forces? There are some empirical formula, it will be calculated, and there is a direct derivation also. You can calculate these forces or torques. Okay, all the things you can discuss. How to calculate this force required to overcome this rolling resistance, how to calculate the force required to overcome the aerodynamic resistance, all these are resistance. Okay, now before discussing that one, how to calculate these forces, you need to understand some basic mechanism or basic terms of the electric vehicle or any kind of vehicle. So what are the basic terms here? First one, speed of the vehicle. Speed of the vehicle. So generally speed of the vehicle what is kilometer per hour. Kilometer per hour. But to calculate all these forces, what you need, anyone I need the velocity, that should be meter per second. Meter per second. Okay. So this is your speed actually. So this is speed actually. How to calculate this one? So speed in meter per second. Speed in meter per second. What is the speed known to us or speed of meter? What it means? It gives us that is the speed in kilometer per hour. Speed in kilometer per hour. If you divide that one by 3.6, that gives you speed in meter per second. Meter per second. Okay. Then this one, this speed in kilometer per hour. How that will be? So, in force setting the value of what is it? Or some of the people are studying it. Okay, how to EUP. You understand? Yes. You cannot understand. Okay. So, in the calculator, so speed in meter per second, so kilometer per hour, so that relation already happened. So speed in meter per second divided by or speed in meter per second. To get the speed in meter per second, that is the pi that count kilometer per hour by 3.6. Okay. Next one is how to convert. It is a chemical convert. Kilometer per hour, you can another concept. Then comes the code of cost type.
टॉप से आपको बाहर निकलना पड़ेगा वेलोसिटी डिफरेंस देखिए so it is देखिएगा so this is the speed of the wheel in rpm এটা আমরা wheel টা কিন্তু স্পিড বলছি revolution কেতে revolution and this is the radius of the tire in meter and this one is 2 pi by 60 so if you multiply 2 pi by 60 you multiply करना हम कहां से करेंगे radius साइड पे rpm का मल्टीप्लाई करेंगे rpm मल्टीप्लाई करेंगे ताकि आपको मीटर पर सेकंड में स्पीड এটা কোন কত করতে হবে 80 ডিভাইডেড 2 pi by 60 this 2 pi by 60 হবে না এটা আমরা করব 60 by 2 pi করব এটা 60 by 2 pi হলো 9.5 60 by 2 pi হলো 9.5 টা বেশি so এটি তাহলে কত করি হবে স্পিড ইন কিলোমিটার পার আওয়ার এটা কি কাজ করতে 3.6 এটা যেটা আছে 3.6 into rpm into tire radius divided by 9.5 it is speed kilometer per hour eta pattern so speed per kilometer per hour how it is related to tire radius and speed of the tire in the meter 3.6 into speed of the tire speed of the rpm into radius divided by 9.5 what is speed in kilometer speed load speed चलने तब power in watt कितनी पाएगा force into velocity force into velocity force and velocity multiply so ATM calculate speed velocity का कितना है ये फर्स्ट मीटर velocity का सेकंड मीटर टॉप करे जो force का गुणा होगा चलिए टॉप बाय रेडियस टॉप इज force into radius टॉप बाय रेडियस का force का पाएगा टॉप बाय रेडियस का force का पाएगी एक velocity है tire radius कैसे लेगा so not the power in watt the tau into rpm into 80 by 698 2 करके 30 so this torque I needed एक torque का okay so how to get this torque how to get this torque means any vehicle you take whether IC engine vehicle or electric vehicle सेतिकी टॉर्क आपको मिल नथि और इंजन रे सेतिकी टॉर्क आपको देल पाबो तार कोन करियो से गियर यूज करू टू गेट हाई टॉर्क हम कोन करियो गियर यूज गियर कितने में टॉर्क कितने में जाने ये तो মানে কোন ছোট টাইম না गियर এটা হলো ইঞ্জিন এইটা আমরা কোন করিयो করব এই ধরে গিয়ার অ্যারেঞ্জমেন্ট করব এই গিয়ার রেশিও যদি আমরা স্মলার ডায়ামিটার টু লার্জার ডায়ামিটার দিবা তাহলে আমরা টর্ক পাবো টর্ক ইনটু এফ ইনটু আর তাহলে রেডিয়াস টা পড়ে যাবে টর্ক পাবো টর্ক পড়লে আমরা স্পিডটা কত করব স্পিডটা কত করব সেদিকে আমরা ফার্স্ট গিয়ারে যে গাড়ি চালাচ্ছি টর্কটা বেশি কিন্তু স্পিডটা কম বেশি হয়ে যায় ফিফথ গিয়ারে গেলে টর্ক কম যাবে কারণ গাড়িটা অলরেডি মোশন আছে তাকে বেশি রেজিস্ট্যান্স কিছু নেই এয়ার ফ্রিকশন দিতে হচ্ছে তাই অলরেডি মুভ করতে তার ইনার্শিয়া কম হয়ে গেছে সেটা ঠিক কিভাবে কম করিয়ে বলবে টর্ক কম দরকার স্পিড বেশি তাহলে সেটা কি দিয়ে হচ্ছে মানে গিয়ার টর্ক এটা গিয়ার টর্ক মানে আউটপুট টর্ক গিয়ার চেঞ্জ করলে যে টর্ক এটা কোন হবে এইটা এন এর মাল্টিপ্লাই করা এটা গিয়ার রেশিও এটা হলো গিয়ার রেশিও এটা ফোর্থ গিয়ারে চলে গাড়ি চলবে তাহলে কোন এটা আমরা কার চলবে দেখা চলে ফোর্থ গিয়ারে চলবে মানে गियर रेशियो का मान नॉर्मली मान फोर्थ गियर रेशियो का मान कापरे মনে করতে হবে ফার্স্ট गियर रेशियो गियर रेशियो কত বেশি সেকেন্ড गियर रेशियो আরো কম থার্ড गियर আরো কম फोर्थ गियर रेशियो টা মান দেব কারণ আমি যেদিকে টর্ক পাউছে কত ইঞ্জিন কো সেদিকে টর্ক আমরা টাইপ করে পাউছে সেটা মান দেব ফিফথ गियर করে লেস দেন गियर रेशियो সেদিকে কোন আরো বেশি টর্ক পাউছে so A is related. So gear torque and engine speed. How we are related actually? It is interrelated. That gear ratio into engine motor torque. It is similar. That is torque body equal to speed का कॉमन. that is gear ratio multiply है. It is gear ratio divided. Gear ratio का divided. ताकि कुछ गलत कर. ये है gear ratio.
So ये सब पूरा कौन सा करता है? डेरिवेशन के सब होता है. So next one is this is not important. The fact that now if you compare करेगा. What is ICTV का जो नाम डीजल की पेट्रोल का सेकंड बैटरी इलेक्ट्रिक एक तो कंपेयर करेगा हमें कॉस्ट कंपेयर भी करेगा तो मैं खास कर लाइफ कंपेयर करें तो वेरी लो थ्रेड ये लो आ रहे थे जब हम इधर सो इट इज लॉन्ग कारण बैटरी घाटे से बैटरी 6 to 10 years after 6 years 4 years like that you need to change the okay why you need to change the battery and the battery it will have some electrolyte and when you are charging the electrolyte का खराब है सिर्फ हमको बैटरी पूरा चेंज करना है इलेक्ट्रोड किसी का बोलो इलेक्ट्रोलाइट का खराब है ओके सो if you have cost for nominal it will come on cost of the vessel but the cost of the battery actually cost of the battery is 15,000 to 20,000 per kilowatt battery capacity जितनी बेसी किलोवाट आवर बैटरी किनेगा सेती बेसी so per kilowatt hour 15,000 to 20,000 if you compare the fuel cost and running cost the ready one of the fuel cost at 100 rupees per liter and here to charge the battery you need electric energy isn't it so what is the cost of electric energy 5 to 8 rupees per unit so that is per kilowatt now what is the running cost is around 10 rupees per around 10 to 15 rupees per kilometer here this is maximum 1 rupee per electric here fuel injection rate means here there is no additional cost but you go fuel injection rate करेगा हमें किसी जो एक्सीडेंट करने लगे हम कौन हो तेरा टैंकी पाइप रे बेसी चला सेते की कंट्रोल दरकार है एक्सीडेंट दाना में हटोली बेसी चला কিন্তু এইটা আমার কোন দরকার এই যে ব্যাটারি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ব্যাটারি কন্ট্রোলার দরকার एक्सीडेंट दाना মানে বেশি করে নিবা কত মোটর বেশি করে দরকার ব্যাটারি কন্ট্রোল করতে দরকার বডি ইলেকট্রিক এটি ইন্ডাকশন তো কিছু কষ্ট দরকার নেই কিন্তু এইটা আমরা টোটাল কারেন্টটা কন্ট্রোল করিয়ে ব্যাটারি কন্ট্রোল করতে and here it can be fully filled or it can be empty तेरा टैंक में कौन करेगा fully fill कर देगा तो empty कर भी चलेगा but here what I can say it is not advisable to fully charge the battery or fully discharge the battery है ना सेकंड नंबर बैटरी को आगे ही है मोबाइल 20% लेस है तो battery is low actually advisable what I can say 20% to 80% 20% to 80% it should not be fully charged it should not be completely empty fully charged करते हैं कि पूरा empty करते हैं ताली के वो बैटरी लगता है बेसिक है ना so this is the comparative what I can say your fuel tank and the battery system next one look at here running cost के लिए देखते हैं running cost पर नहीं अगर पर किलोमीटर टाइम कितने माइलेज देना 10 किलोमीटर पर लीटर हमें कितने टका देले गोटे लीटर को 100 टका देले ताले गोटे किलोमीटर लगे 10 टका पर लीटर देले गोटे किलोमीटर लगे कोई 10 टका देले एटा कोन देखो एटा 5 to 8 रुपीस पर किलोवाट एटा में गोटे किलोवाट आवर एनर्जी रे केते बाटे जाय करबा 8 किलोमीटर ताले 8 रुपीस पर किलोवाट आवर चार्जिंग रे केते टका दो 8 टका दो ताले 8 टका देले 8 किलोमीटर पर किलोमीटर गोटे टका बुझलो 8 10 किलोमीटर जो 100 टका ताले 10 टका सेटा
टोटल कितना लगे ना हमारा 900 वाट आवर पर किलोमीटर एनर्जी कितनी है 50 वाट आवर पर किलोमीटर ऑटो पे बस में चलेगा 900 वाट आवर ताले गोटे किलोमीटर जगह कहीं आपको पाका पाकी 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 1 किलोवाट 900 वाट आवर 1 किलोवाट so if you look at here जब ये देखिए गोटे बस हमको गोटे दिन में 300 किलोमीटर जाओ यानी बैटरी कैपेसिटी कितना चलता है 270 किलोवाट इतनी मिनिमम को बैटरी चाहिए ताकि ये 300 किलोमीटर जाएगा next one so how to reduce the cost of the battery how to reduce the cost of the battery okay here what I can say now we don't have this strategy actually ये हम सिंगल टेंशन but the meaning of this is battery swapping means suppose I want to go 300 kilometers the total calculator है 300 kilometers में मुझे 270 किलोवाट का बैटरी करना है एक दिन तो 300 किलोमीटर जाते 270 किलोवाट का बैटरी करना है and वो बोलते हैं कि सिंगल बैटरी मोनो बैटरी नो करनी तीनटा हाइड्रोजन डिवाइड करना तीनटा छोटा बैटरी में एटा पानी फिक्स है तो का एटा में चेंज करते हैं ଆଉ ଏଟା ସବୁବେଳେ ଫୁଲି ଚାର୍ଜ ହେଇଥାଏ ଏଇ ଦିଟା ଆମେ ସ୍ୱାପ କରିପାରିବା ଏଇ ଦିଟା ଆମେ ସ୍ୱାପ କରିପାରିବା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସ୍ ଆମେ ଲଗେଇ ଦେଉଛୁ ସେବେଳେ ଆମର ଯଦି ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନକୁ ଯିବା ଆମେ ଯୋଉଟା ବ୍ୟାଟେରୀ କୋଉଟା ରିଚାର୍ଜ ହେଇକି ତାକୁ ଦେଇକି ଓଟା ଫୁଲି ଚାର୍ଜ କରିପାରିବା ଏଟା ବ୍ୟାଟେରୀ ସ୍ୱାପିଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟାଟେରୀ ସ୍ୱାପିଂ ହେଲା so eta discharge here eta de kariba ta eta de kariba eta ke fix cost hobe should be aware na ami jemti continuous cost hobe ami manku car petrol fill kala हम गाड़ी का कौन करे करे नहीं सही के टाइम लगे अच्छा हम गाड़ी तेल वाला तो गाड़ी को पेट्रोल से तो नहीं पेट्रोल स्टेशन को डिजेल से को गाड़ी होते नहीं सेबले एटा हम चार्जिंग स्टेशन जब बैटरी स्वापिंग करे बैटरी दबा उन्हें मोड़ दे तब बैटरी की टाइम लगेगा ओके नेक्स्ट वन इज So these are the process already have to be issued for the battery. Okay, and you take these are the process that will be acting on the thing. Okay, but this process already have to do aerodynamic track, aerodynamic resistance. Okay, so this is due to what happens in the air friction. This one is rolling resistance due to the friction of the road to friction. This is uphill resistance. Incline to the case. And another inertia of the vehicle. So, how to calculate all these forces? First, we see aerodynamic force. How to calculate? This is the general formula for calculating aerodynamic. How to calculate R, rho, CD, equal to this. So, what are the different terms we have? So, R can be constant, rho is equal to air density. Air density. Okay, what is the air density? This is normal air density. 1.2 kg per meter. And what is this CD? Nothing but the drag coefficient. What is this A? A is nothing but the area of the vehicle. Front area of the vehicle. Front area of the vehicle. Okay, so that is what I can say area of the vehicle. And what is this V? V is nothing but the velocity of the vehicle in meter. Velocity of the vehicle in meter per second. So this is how I can calculate the aerodynamic track. Okay, next one is gradient. What is the meaning of this gradient actually? Gradient suppose this inclination. Gradient is what it is, nothing but the inclination. The inclination. So road gradient that will be normally given percentage. 5%, 8%, 3% like that. So we need to convert that to degree. Degree convert to degree. How to convert? Suppose we are having 5% gradient. So 5% gradient means 0.05. So this one I can say tan inverse 0.05. That gives you this angle theta. A angle theta. So tan inverse 0.05 that is 0.05 gradient. Then theta
Small angle is nearly getting theta. So just like sine. Sine of a small theta means small angle theta means theta. So similarly here, 10 over 0.05 is 0.05 radian. We have to convert that from degree and 3 degree radian. 3 degree. Okay. See today, I am going to gradient percent on the angle of inclination value. So angle of inclination क्या लाता है? हमें theta काट के रखें. वो क्या है? Rolling resistance कौन है? Rolling resistance कौन? आप क्या है? Climbing resistance. theta जिसको हम ऐसे बोलते हैं. है? Rolling resistance है वो क्या करती है? Rolling resistance होता है वो क्या होगा? nothing but this is due to elevator. ये जो climbing resistance होता है वो gradient resistance है. Rolling resistance ना এটা হচ্ছে কোনো this is due to air friction, this is due to the friction offered by the road. Rolling resistance. Friction offered by the road. है? এটা কিন্তু friction offered by the road mg mu cos. mg mu cos. What is mg actually? mg means weight of the vehicle. Weight of the vehicle. Total weight of the vehicle. ये मेरा total weight of the vehicle g multiply करें total force p कितने downward का force है. So force का theta component है. मतलब theta अच्छी theta component है. वो mg sin theta और mg cos theta. ये जो mg cos theta का कोण होगा এটা আমরা ফ্রিকশন রোলিং রেজিস্ট্যান্স ফ্রিকশন তাহলে রোলিং রেজিস্ট্যান্স कहते हैं ना mg mu cos theta এর কোএফিশিয়েন্ট অফ ফ্রিকশন mu then climbing resistance that is mg sin theta ওটা আমরা এই ডাউনওয়ার্ড ওটা পাবো এটা mg sin last one inertia force means rm into acceleration already we have vehicle getting some mass, you will have some inertia, so to drive the vehicle, you need to overcome the inertia. But then actually, just like your force is equal to m into the mass of the vehicle into acceleration of the vehicle. Okay. So these are the 5 forces you need to calculate. एक पांचटा हमको प्रयोग करो. Aerodynamic drag को, आगे नाम रहता है rolling resistance, climbing resistance. Okay, so if you look at here, the value of CD, rho, A, all. So these are the values given for different types of vehicle. For two-wheeler, this is your CD, and this is the area. Front area actually which is coming against the wind. So theta area. प्रति vehicle front area में कितने? कितना two-wheeler, three-wheeler, कितना different type of vehicle में कितने area है? এটা সেটা two-wheeler, three-wheeler, four-wheeler में আমরা এটা কেটে কেটে আছে সিডি ভ্যালু কেটে মিউ ভ্যালু কেটে এটা এরিয়া কেটে এটা টায়ার রেডিয়াস এটা নাম রেডিয়াস অফ দ্য টিপিক্যাল এক্সাম্পল আচ্ছা আর এই জিডব্লিউ what happens when you use gravitational weight আমার ভেহিকুলার weight so these are the various forces calculated how to calculate different forces ये force को हम calculate So first one, aerodynamic drag, already presented, half tiller, so 0.5 will go into CD into A into D square, it is 0.5 actually, rho tiller 1.2, CD 0.6 into H, CD, that is rho tiller to H, 0.6, 0.9, आगे देखो, हमारा speed of the vehicle को 30 km per hour पे 30 km per hour को by 3.6 km per second सेटा and the speed of the vehicle in meter per second so this much of force I need 22.5 Newton of force I need to overcome this air friction or aerodynamic drag similarly rolling resistance the resistance offered by the friction offered by the road so how this is acting so mg mu cos theta so we put all the value mass of the vehicle acting is 200 kg so this is your mg this one is your mu friction of coefficient and this one is eta kete degree is la theta 8 degree new change and this is 29.1 if you calculate this one it will come out 29.1 okay it is the climbing resistance the thing you do gradient how to calculate this climbing resistance mg sin theta means 200 into g into sin of 80 so this is 270 Newton then total force if you calculate all of these forces
principle of binding force. These are the forces that is acting. A force गुड़ा को आपको act करती कार को motion का against. कार को motion का against. ये सब गुड़ा को आपको overcome करना पड़ेगा कार का नहीं है। So it accelerating force का किंग गुड़ा हो जाए। How we calculate the accelerating force? हम कितने acceleration develop करें? हम कार का move करें। ताकि ये सब कौन है क्यों? एक उन्हें miss कर लिया, ये क्या हम करेंगे? Inertia force. ये सब force उठाकर रोलिंग को क्या accelerating force के अंदर करता है। So how to calculate this accelerating force? Acceleration note to df by d, p by t. That means everything is starting from zero. P is the final velocity. Then this is t time required from zero velocity to final velocity. कितने हम लोग df by t. So acceleration df by t. अच्छा force required कितना होगा क्या कितने लोग हैं? AT acceleration calculate करो df by t. F का कितना काम होगा क्या? calculate किया तो displacement आएगा. Acceleration distance क्या जो distance का काम है. क्या जानते हैं ना? S into ut plus half at square. S into ut plus half at square. ये displacement का. S into zero. Initial velocity zero. खाली half at square है. Half at square. सही ना हमको. Okay. Next one. So what is the working acceleration force into distance? Force संगे distance multiplied by volume. It is force by volume. So this is क्या है तो लेंगे. And this one is the acceleration. Half at. Not the acceleration. This is the distance. Half at square the distance or displacement. This is the force. Force equal to value. So you put all the values here to get this total work done or work done acceleration. This is F. It has a shocking. So FA into S. So this is your FA formula. How to get this one? FA regular harmonic M into A. It has M into A. Okay. Then it can calculate distance. Half at this point. Half the barrier is 88 square. So to calculate all these, finally what we have work into acceleration or work required or work into acceleration 0.5 into M into P square. 0.5 into angular mass of the vehicle P square. Final velocity. Final velocity. So this is the total work done during acceleration. Then how to calculate the power? Power is the work done by height. Rate of change of time, rate of change of energy. So what to power? How to calculate the power? So simply W by T. We have already calculated W by T. So this gives you what it means in the middle. Again, the power element. Again. Okay. So for a two-wheeler, I have calculated it. So we have a two-wheeler calculated. Okay. So accelerating force कितने चाहिए? I think it will be able to P by D. So mass कितने चाहिए? 190 PF. PF आगे calculate कर चाहिए. 8 PF. Then PF square. Mass la 0.5 into mass la 190 PF plus 6.95 meter per second. Then finally time. Suppose it is taking 20 seconds. It is taking 20 seconds from 0 to achieve the final speed. Final speed is 6.95 meter per second. Then we have calculated total number of average power required to the total. Okay. So already I have told you this power of this torque, whatever we have calculated, is the output torque, so whatever we have calculated, this we have calculated, good calculator. ये power torque को भी calculator. हमारा टायर की स्पीड और रेडियस सब calculator. सेटिंग क्या करना होगी? इंजन आउटपुट सेटिंग तो आप देखना करना होता है. सेटिंग कौन सा गियर को से लोग लेते हैं. कौन गियर इसी बोर्ड के अंदर कहते हैं हेड टॉप के फर्स्ट गियर, अभी कॉम टॉप के सेकंड गियर, अभी कॉम टॉप थर्ड गियर, फोर्थ गियर इसी 1.8. Look at your fourth gear, that is gear is 1.1. So gear is 1.1 means engine torque that will be set at the torque at the wheel. Chopper to set. So reverse gear is there
is what I can say minus it there. Next one. So this is what I can say the power required, total power required. If you can power the calculator, it a type calculator, 229. So if you calculate for four-wheeler at different speeds, this is the power required. 25 km per hour the drive करते हैं power होता है. यदि हम 50 km per hour का drive करेंगे तो कितने देता है? यदि 90 km per hour drive करेंगे तो 382 watt है. यदि power देता है, यदि speed देता है, यदि speed बहुत बढ़ जाए तो this power. So this is how to model electric. ये total सब equation नहीं total model है. इक्वेशन को नहीं मिलेगा ये जहां का इक्वेशन है सब नहीं ये तो এটা ম্যাট্রিক্স okay so this is the velocity it is velocity input acknowledge a velocity okay so if you look at here এটা velocity এই velocity কত দিব velocity এটা velocity কিলোমিটার per hour হতে তাকে মিটার per second বলে হবে সেটা ইনটু 1/3.6 দিন আছে 1/3.6 এই টোটাল ফর্মুলা কোন কাছে না এরোডাইনামিক গ্রাফ का आधार पे टोटल फॉर्मूला और बोलते हैं हमारे एरोडाइनामिक ग्राफ में এটা ফর্মুলা हाफ रो सी ए बी स्क्वायर वेलोसिटी स्क्वायर वेलोसिटी स्क्वायर तापर हमर हाफ कोड दरकार तापर रो अछि सी डी अछि ए अछि से सब टके मिले अछि ओके सो फर्स्ट वन वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर देन दिस इज 1/3.6 to convert it to meter per second or whatever it is then it is used to be square तापर এটা हाफ माने 0.5 रो रहला सी डी रहला ए ये सब मिलके हमर एरोडायनामिक ओके এটা सब ये गोटे ये लाइन का हमर एरोडायनामिक नेक्स्ट वन एटी हमर तीनटा जिनिस हम दरकार এই দুইটা ফোর্স কাটিয়া করতে থিটা দরকার রোলিং রেজিস্ট্যান্স ক্লাইম্বিং এদের কাটিয়া করতে থিটা দরকার হ্যাঁ সে থিটা কোন গোটে হলা কোন mg mu cos theta এটা রোলিং রেজিস্ট্যান্স আর ক্লাইম্বিং রেজিস্ট্যান্স সিম্পলি mg sin এটা থিটা দরকার দিবে ওটা sin দরকার ওটা cos দরকার সেটা থিটা নিলে আমরা ভ্যালু that theta equal to degree radian so to convert that one to radian pi का value automatically তারপর কি cos দেয়া তারপর এটা হলো সেশন gain into g into mu করে রোলিং রেজিস্ট্যান্স সে থিটা সঙ্গে রেডিয়ান বাড়লে এটি sin মল্টিপ্লাই mg করে এটা হলো ক্লাইম্বিং রেজিস্ট্যান্স তারপর এটি আমরা এটা আউটলে ক্যালকুলেশন করছি এটি ইনারশিয়া এর কোন দরকার নেই m into a m into a এটি মাস অলরেডি আছে এই যে ভেলোসিটি দিয়েছি একটু d বাই dt করলে আমরা অ্যাক্সেলারেশন সেটা ডেরিভেটিভ আছে এটি আমরা ইনারশিয়া পাই টোটাল ফোর্স অফ এয়ার করলে আমরা এটি টোটাল ফোর্স পাই টোটাল So
मझिका सर सब मझिका सर देखिए हमने PPT देखिए So all the three questions, what are the different terms of the uniform equation already active? So what is the aerodynamic drag already active? So this one is aerodynamic drag to the air friction. The opposition provided by the air friction for the movement of the vehicle. So this is the aerodynamic drag. This one is aerodynamic coefficient. Rolling resistance. Rolling resistance means this is the friction offered by the road for the movement of the car. The car को move करके road में कितनी friction हो? First time air में friction तो लगेगी कैप्चर करने के लिए तो force ना. हम जो rolling resistance होता है गाड़ी का जितने रास्ते में चला है वो काम कर force. ये तो opposition रास्ते हैं लेकिन हम लोग friction रास्ते हैं. इतने कैप्चर करेंगे. Total force का कितने friction force. Next है rolling climbing resistance. Climbing resistance में हम गाड़ी का incline होता है. incline रास्ते में होता है. दाली climbing. So this depends on what I mentioned, these two forces, rolling resistance and the climbing resistance. These two forces depends on mainly this angle of inclination of the road. Angle of inclination of the road. CD and calculate. And finally, this is the force due to inertia of the vehicle. F equal to simply mass into the acceleration. So based on these four equations, I have begun from what I can calculate singly. All the equations, those are incorporated in the single method. So this is the velocity into the entire system is velocity. Into the entire system is velocity. So this is nothing but 1 by 3.6 that we are ready to convert that one to meter per second, kilometer per hour to meter per second. Next one is 0.5, that is half lap. Then rho, then CD, and this is the area. Area already have to this area which is the front area of the car. So like this, calculate this aerodynamic force. This force what I mentioned is the required force, the force that is offered by the air. Next one is rolling resistance. Rolling resistance is the frictional force offered by the road. The road can be move road with the friction force. It is calculated. So next one is this one, climbing resistance. Due to the inclination of the road, you need some extra force or extra power. So that will be the climbing resistance. Last one is inertia of the vehicle. Inertia of the vehicle. So if you add all these forces, here we get the total force required by the engine or total force that will be delivered by the engine for the movement of the car. So this much the force I need to move the car at this velocity. At the velocity of the car to move the total force. The total force with the quantity. Wind opposition ଅଛି wind opposition ଅଛି rolling resistance ଅଛି road friction ଅଛି ଏଠି ଆମର climbing road ଟା incline gap ଅଛି ଆଉ finally ଆମର କଣ ଅଛି ଏଟା inertia of the vehicle ଏଠି ଦରକାର total force now here the total force with the total force if I multiply this r radius multiply force into radius करें it will top can top
Okay. Then this total torque and this one the gear ratio. It will work in gear ratio. It will gear ratio 4 newtons. It will gear ratio 4 newtons. एतिकी मोर कोटे दरकार गियर रेशियो 4 के नहीं एतिकी मोर टायर दरकार एतिकी टॉर्क और टायर दरकार इनटू आर करे टायर में टॉर्क एतिकी दरकार 1/4 गियर रेशियो करले इंजन के आउटपुट रे मते एतिकी टॉर्क दरकार इंजन के आउटपुट रे एतिकी टॉर्क आते 4 टाइम्स मल्टीप्लाई की हम चक्कर को करबो है एटा नाम को टॉर्क एटा नाम टॉप इंजन को एक टॉप को कौन बाहर कर लिया है पावर बाहर कर लिया क्यों बाहर कर टॉप पावर क्यों बाहर कर लिया एक तो टॉप कैसे लगा एक पे टॉप कैसे लगा एक है टॉप हाउ टू कैलकुलेट द पावर 80 हां टॉप इनटू 10 स्पीड 2 pi n 60 दो टाइम में स्पीड अच्छा 80 हमने वेलोसिटी है एक वेलोसिटी में कौन कर ले मीटर पर सेकंड अछि ताकि मतलब रेडियन पर सेकंड प्रयोग करो मीटर पर सेकंड रेडियन पर सेकंड प्रयोग करो दैट 1 by radius of the tire करो रेडियस सेकंड मीटर पर सेकंड देला 1 by radius पे देले सेटा मीटर पर सेकंड रेडियन पर सेकंड देला ताकि से कौन करू 8 को मल्टीप्लाई करके 4 कौन टाइम मल्टीप्लाई ना गियर रेशियो फाइनली को कौन करके स्पीड लाइन तो टॉर्क into 2 pi by 6 angular speed 80 pi to power so this power will become watt actually 80 to power apply that will be watt so divide that one by 1000 that will give you the power in kilowatt 80 to power apply in kilowatt okay now how to calculate the energy for calculation to decide the strength of the battery I don't need power anymore I need energy kilowatt hour rating of the battery kilowatt hour means energy so how to get the energy there you need to multiply time का multiply क्यों भी करेगा and the time multiply करेगा तो सीधा क्या integrate करता है ऐसा ना d by dt का कॉम्पोनेंट तो integrate करता है integrate करते तो automatically time का multiply होगा so it is time multiply करके यहाँ पे energy होगा okay so this is the simulated model actually So, whatever the constant I have taken in the model, say rho, C, A, जहाँ से वो variable data है, total. जो तो मेटला सिमुलेट मॉडल को कौन है रो लेके दिली इन रो को वैल्यू देना दरकार है से वो वैल्यू दे से वैल्यू को देबी ना ये मेटला फाइल के लिए स्क्रिप्ट करके देबी तो वैल्यू के देबी Rho is 1.2, CD 0.6 is the front area of the vehicle. 0.9, this one is mass of the vehicle. This is the acceleration due to gravity. This one is mean. This is theta, angle of inclination. That is 8 degree. This is the velocity in meter per second. Velocity of the car in meter per second is the tire radius. Tire radius. And is the gear ratio. And the gear ratio. एतिकी देखी को कॉल करी यही जो मैटलैब फाइल लूप मॉडल का को कॉल करी है जो सिमुलेशन मॉडल का तरीका को कॉल है so what the syntax to call the simulating block actually from the model sim and this is the name of the simulating model so contact with 10 and this is 2 times 0 contact with 10 to the actually contact with 1 to the actually so the one 10 actually Okay. So this is how we call the model from the script file. Then different plots I have. I need to plot different what I can say nothing but the forces. So first plot will give you the aerodynamic force or what I can say wind resistance. Second one resistance offered by the road. Third one due to inclination. Fourth one what I can say due to inertia.
inertia पे भी दरकार next one the total it है वो total और तो बोले next one is the total force next one is the total torque next अब तो then power finally energy okay take some time because what I can say is running for 25 minutes second 2.00 second 80 second by no possible take time okay so we get all the figures so here what I can say nothing but the energy last figure to the 8 on the level energy के अंदर का around what I can say 5800 kilowatt hour of 5800 kilo to the area next meaning that's good no it's a figure that can be used what is figure is figure okay can be used अच्छा ठीक figure 7 का क्या power है এটা কিন্তু কোন চীজ কি এই ভেলোসিটিটা কনস্ট্যান্ট নো থাকবে নো This is এটা আমরা এনার্জি দরকার এদিকে এনার্জি দরকার যদি আমরা ভেলোসিটি কনস্ট্যান্ট হয় 30 মিটার পার সেকেন্ডের ভিতরে কনস্ট্যান্ট নেবার এদিকে এনার্জি দরকার এটা মিনিমাইজ করলে ক্লোজ করলে সেটা মিনিমাইজ করলে এটা আমরা পাওয়ার এদিকে দরকার এটা আমরা পাওয়ার দরকার যদি 30 মিটার পার সেকেন্ড আমরা রান করলে 30 কিলোমিটার পার আওয়ার দিলে তাহলে এদিকে আমরা পাওয়ার দরকার নেক্সট এটা আমরা ছিল না সো ফিগার 6 থেকে তোমরা আসলে আমরা দেখতে পাবো ফিগার 5 ইজ হোয়াট আই ক্যান সে নাথিং বাট দিস ইজ টোটাল ফোর্স এটা টোটাল ফোর্স এ 1 নিউটন দরকার আমরা ক্যালকুলেশন করতে এটা নিউটন দরকার তারপরে ফিগার 4 ফিগার 4 है ना এটা ফিগার 4 है ইনার্শিয়া বাই নেগেটিভ ফোর্স ইনার্শিয়া বাই ফোর্স দিতে হবে এটা কেন জিরো আসছে কি কই পারি এটা কোন লাগে 6 এটা কেন জিরো আসছে এটা ইনার্শিয়া ফোর্স না ফিগার 4 মানে এটা হলো ইনার্শিয়া বাই আসছে এটা কেন জিরো আসছে এর বিটুইন এমএ এটা কেন জিরো আসছে গাড়িটা মুভ করছে কিন্তু এটি এই ইনার্শিয়াল ফোর্সটা জিরো হয়ে গেছে কারণ গাড়িটা এখন কনস্ট্যান্ট ভেলোসিটিতে মুভ করছে অ্যাক্সেলারেশন জিরো ভেলোসিটি চেঞ্জ করবে 30 মিটার কিলোমিটার পার আওয়ার যেটা আছে সেটা ফিক্স আছে সো ইফ ইউর ভেহিকল ইজ মুভিং উইথ হোয়াট আই ক্যান সে কনস্ট্যান্ট ভেলোসিটি acceleration will be zero final velocity minus initial velocity by time so acceleration zero means you don't need any actually what I mean is nothing but initial velocity next again 3 figure 3 this is the figure 3 you got that is the climbing force so now we are talking incline negative calculating force that next figure 2 এটা আমরা রোলিং রেজিস্ট্যান্স যেটা মার্ক করছি okay is the force
required to overcome the resistance offered by the road. The road can be resistant that will be last time. First जो है air friction का होता है aerodynamic force or aerodynamic drag that will be so तो गाड़ी को काटने के लिए constant velocity में move करो मतलब inertial force का constant है how is so good as constant है ये बड़ा टोटल लाइनस के लास्ट में खाली एनर्जी का एनर्जी का होते स्ट्रेट लाइन है यही जगह पे होता है फिगर क्लोज करते हैं ये So I have changed the model. Any model la change कर दिया. ये भी कौन है जी? Velocity constant है. Normally हम कौन होते हैं velocity constant. गोटे जाकर को हम ये जाकर होते हैं constant velocity जाती है. तो कौन सी चीज़ को खाना होती है लोग असली ये है गोटे हम उसमें क्या गाड़ी कितने बनते हैं. सेट हम constant velocity तो होते हैं. ये गोटे constant velocity मतलब ये कौन है? विभिन्न कंट्री विभिन्न drive cycle है. विभिन्न drive cycle है. drive cycle को क्या है? ये क्या है उसको ड्राइव साइकिल बोलते हैं उसको ये है किस साइड पे डेटा है वो ड्राइव आपको तो डेटा है वो ड्राइव और टाइम चेंज है ना स्पीड का भी चेंज होता है कांस्टेंट स्पीड से होता है ताले यही ड्राइव साइकिल यदि हम एक देखें ताले ये सब कैलकुलेशन से नहीं होगा ताले यही ड्राइव साइकिल के हम सब कैलकुलेट करते हैं This is Dr. Devasys from Pune Institute of Science and Technology. Thank you. Any question? जहाँ हम कर सको इसे लोग This is a great certificate to PMSM. Great honor to PMSM. Anyone? Girija sir, you are the all-rounder. Any question? Karena it's just like a classroom teaching math
mathematics, physics, dynamics, statics, everything available. Then it is already mixed together. That is the theory of electric vehicle. So thank you, Vinod sir. It is great honor, great privilege. He is just like my younger brother, and I will know perhaps last 20 years perhaps back we are well known to each other. So we are really proud of you, sir. Thank you on behalf of Synergy Institute of Technology and Electrical Engineering. We are very our ex-principal, and right now the Dean Student is come to honor our speaker, Sri Vinod sir. Sir, Smriti sir, please come and you honor to like that. Photograph please.